India. Am I audible, Dr. Neha? Yes, yes. Okay. Shall we begin? Yes, please. Thank you. As usual, with a small prayer in the lotus feet of the Lord. वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्. Last week we had discussed briefly about the 5 basic elements forming our body, forming the complete universe, which are known as mini universe, that is our body, and major universe, that is major universe, that also is composed of the same 5 basic elements. And now we will go further from that. First of all, let us know the basic principle. First and foremost principle of naturopathy, as I am not so experienced in public speaking, so kindly bear with me. First and foremost principle of naturopathy is nature is self-doctor. Prakriti swayam chikitsak hai. Provided we make sure that we live our lives strictly abiding by nature's laws handed down to us by our ancient rishis. These laws were practiced by themselves during those days, helping them to work for humanity for minimum 100 years. Mind you, only 100 years is minimum. There have been a lot of instances where they have lived beyond that. We will deviate from the subject, so I'll focus only on today's topic only. It is not maximum, it is just 100 years. People have resolved and lived beyond 100 years also, and they have worked as efficiently as they did during their earlier years, till end of their lives. There are instances, numerous examples in ancient times as well as in the present times also. Latest, you must recall the example of Swami Govind Dev Giriji Maharaj, who is the treasurer of Ram Janmabhoomi Trust, Tirth Kshetra, as well as trustee of Krishna Janmabhoomi also. He has been doing his job, his savings society for last 42 years without even a single holiday in his. He takes leave only for 9 days during Navratris. That for inner cleansing and gaining strength for next 6 months. So every in a year we practice Navratris twice in a year. First of all, in order to put natural laws into practice in our daily lives, we need to appreciate true value of human body, or rather human birth. It is not merely by accident that we have got this human birth. We now all know it. So we must appreciate the value of this body and respect the nature. When we respect the nature, प्रकृति की हम जब सम्मान करते हैं तो हम ईश्वर का ही सम्मान करते हैं, क्योंकि प्रकृति जो है परा प्रकृति है या अपरा प्रकृति है, दोनों ही शक्तियां भगवान की ही बनाई हुई हैं. हमारे जीवन को वो लीलाधारी है. उन ये अभी अन्य अपने जो प्योर, व्हेन वी गो ऑन टू pure spirituality, then we will discuss those aspects. But for this session, it is enough that Paraprakriti nature is made by God for facilitating
our Purusharth. In order to get rid of diseases or weaknesses, we should think along improving our digestive system first of all, rather than taking the shelter of medicines or toxic. If the digestive power is not good, even the valuable nourishing elements will not be able to benefit us. They'll go in the stomach and without getting digested will be excreted. If they are not digested and juices and blood are not formed, how can they nourish the body? How will they augment strength? If the digestion power, even an ordinary, if the digestion is proper, even an ordinary food can provide full strength. Proper functioning of the digestive system, depends on 4 basic factors. They are selection of eatables. We should be very careful in what we eat. देखिए जब हम कहीं जाकर के किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं तो सीधा ही पूछते हैं, अरे तू क्या खा के आया है? What have you eaten before coming here? जैसा अन्न वैसा मन, जैसी पानी वैसा बने वाणी. These things we have heard, you all must have heard also. So first is selection of eatables. We must be very careful because that matters more significantly. The technique of eating, that हम आजकल चबाना तो भूल ही गए हैं. That in the last session also I had requested you all that we must concentrate on eating properly. We should chew the food. कहते हैं ना कि eat the food and drink the water. पानी को ऐसे नहीं कि simply you are transferring from one vessel to another. It should not be like this. We should hold the water for some time and then gulp it down. So first is selection of eatables. Second is technique of eating. Third is appropriate physical activity as suitable to our own body. Proper management of daily routine. That is last factor. Our daily routine also needs to be rectified, which we all are not taking care. So briefly, we'll go in detail of these 4 topics. Selection of eatables. Human being resembles the configuration of a monkey. The latter eats fruits and leaves. Therefore, the dietitians recommend fruits and vegetables as the best food for the human beings. There is no other food that matches its easily digestible, nourishing, invigorating, and pure blood forming qualities. The scriptures say, Jivo jivasya bhojanam. Only live eatables are best food for human being. जैसे मैंने लास्ट सेशन में आपसे निवेदन किया था कि जिस भोजन में स्वयं में प्राण नहीं है वो हमारे शरीर में क्या प्राण डालेगा. That is why milk, curd, buttermilk, fruits which are supposed to be full of vitality rank first among the eatable items for human species. Apart from being juicy and lively, they also satisfy the taste buds. Next follows the category of vegetables. They certainly possess vital elements but don't fit in the criteria of taste. देखिए हमको खाना जो खाते हैं वो स्वाद के लिए नहीं, सेहत के लिए खाना चाहिए. ये हमें खाते समय कोई भी खाएं तो ध्यान में रखने की वाली बात. They certainly possess vital elements but don't fit in the criteria of taste. Therefore, many of them are not consumable in the natural form. For example, gourd, pumpkin, potato, brinjal, bitter gourd, round gourd, etc. cannot be eaten raw. They have to be cooked. But cooking also requires a technique. You should never cook anything 100%. Gandhiji always ate half cooked food only. Any naturopath will talk about this, that
क्योंकि जब आप उसको पूरा कुकड अप कर लेते हैं, देयर इज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट which can nourish your body. So it should be not 100% cooked. While examining the utility of eatables, it should be seen whether they suit the taste buds in their natural form or not. They are juicy and live or not. Foods that pass this test should be considered best. These are some fruits like apple, grapes, pomegranates, etc., which can be obtained in good quantity only by rich people. However, there are number of fruits which even the poor can afford to buy. Example, orange, mango. These notes I had prepared during my course when I did naturopathy course. Barley is the only grain among the cereals which needs the removal of husk. All other grains should be used with husk only. They should be taken in the form of khichdi or dalia. That khichdi, dalia, chutneys, they were all gone out of our menus these days. Next comes the technique of eating. The way of eating is more important than the quality of eatables. Taking even ordinary food in the right manner can give better results than consuming quality food in a wrong manner. In this context, one has to pay attention to three questions: when to eat, what to eat, how to eat. When to eat? When the stomach demands, when you feel so hungry, then only we must eat, and at fixed intervals. And for that, we should have our, as far as possible, we must have fixed timings for foods. Normally, a healthy person is enough to take meals twice, but depending upon these days lifestyle, we can have 3 times also. There is no problem about it. One can adjust this time slightly according to one's own convenience. This habit of taking meals at fixed times is nicely rewarded in the long run. Further, one should not take care anything in between 2 meals. Normally, these days, especially young people, they are in the habit of taking something or the other every now and then. That is not proper. It's a bad habit to chew something or the other throughout the day. This disturbs the digestion process. How to eat? One should eat with a calm, pleasant, and relaxed mind. This applies in preparation of foods also. One should have relaxed and पॉजिटिव माइंड, सात्विक मन से ही भोजन बनाया जाना चाहिए. इसके ऐसे ऐसे एग्जांपल्स हैं जिसमें lady has prepared a food in a bad mood and or has given a feed to her kid, to infant, and it has died. There is such a severe example also in naturopathy we have read, because it changes the entire chemicals. The task of teeth is to grind the food, and the task of stomach and intestines is to digest the same. If the teeth do not grind the morsel properly and it is swallowed half ground, the work of teeth has to be done by the stomach. And the intestines, and this process, they are overburdened. These are small glands in the mouth. There are small glands in the mouth which secrete digestive juices while chewing the morsel. If these juices are not made available to the food, it is difficult to digest the food. That is why we insist that we should 24 दांत हैं तो कम से कम 32 दांत है तो 32 नहीं तो 16 बार तो कम से कम हम उसको 16 बार में तो एटलीस्ट प्रैक्टिकली 8 बार तो हम उसको करें, चबाएं नहीं भोजन को, सीधा निकले नहीं. जैसे हमारा ध्यान टीवी में होता है या किसी भी एक्टिविटी में होता है, तो वी डोंट फोकस ऑन, वी lose sight of how we are eating and we are simply gulping it down. According to Ayurveda, each morsel should be chewed 32 times. Of course, that is not possible these days.
busy, hectic schedules. In practice, such a counting is difficult. Nevertheless, one must pay attention to grinding morsel thoroughly before swallowing it. Dalia, halwa, kheer, etc. should also be chewed properly. Not that suppose राइस है, खीर है, इसको हम ऐसा नहीं है कि हम सीधा इसकी जरूरत नहीं है ज्यादा चबाने की. इसकी भी उतनी जरूरत है जितना सॉलिड फूड को चबाने की. They should not be drunk like water. Considering food as amrit, nectar, and prasadam, food offered to God is prasadam, one should eat it with joy and respect. It is a bad habit to get angry with finding fault with food on slightest reduction in taste or flavor. बिकॉज जैसा अभी मैंने निवेदन किया कि भोजन हमको सेहत के लिए करना है, स्वाद के लिए नहीं. आप how much to eat? The answer to this question is that one should eat less than the hunger. लास्ट सेशन में भी हमने बात की थी कि जितना भूख है उसका आधा ही हमें खाना है, बाकी आधा हमको पानी और हवा के लिए छोड़ना है, आकाश तत्व के लिए और पानी के लिए. तभी हम लाइट फील करेंगे और वो खाना हमारे लिए काफी है. जब jokingly Swamiji had mentioned in one of their discourses that some doctor had told him कि स्वामी जी जो आम आदमी जितना खाना खाते हैं उससे आधे का से उनका जीवन का काम चल सकता है, लेकिन बाकी आधा जो खाते हैं उससे हमारा काम चलता है. इसलिए उनको हम ये चीज नहीं बताते हैं. प्लीज डोंट टेक अदरवाइज डॉक्टर साहब. Appropriate physical activity. Now comes, if a machine is kept idle for a long time, its parts get rusted and the dirt is deposited on it, and it is run excessively. Its parts are wearing out and fast become useless. The same rule applies to the human body also. Laying idle in laziness, shirking physical activity, avoiding manual jobs. In order to retain the power and flexibility of muscles, it is essential to give appropriate physical work to all parts of the body. Like Surya Namaskar, it is comprehensive and अपने आप में काफी है. अगर आप 5 से 7 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं तो अपने शरीर के स्वास्थ्य के लिए फिजिकल एक्टिविटी और फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सभी आ जाती है उसमें. Thus, in order to maintain health, it is absolutely necessary to undertake daily some physical activity, exercises that involve nearly all body parts. However, this physical labor should not be so much that it exhausts all the vital energy. If a person works more than one's capacity, it increases heat within his body, which in turn destroys the vital elements. Proper management of daily routine. Apart from proper food and physical activity, in order to maintain good health, we have to be very strict about our daily routine. There should be time slot for each and every task. Getting up at a fixed time. Of course, it can't be started in hurriedly, immediately in one go, but we can improve gradually, step by step. Like I requested earlier that 20 मिनट आप एडवांस कर दीजिए सोने उठने का समय शुरू में, फिर 10 मिनट 20 मिनट ऐसे रोजाना करते करते धीरे धीरे हैबिट में आ जाएगा. और आप वही ब्रह्म मुहूर्त जो सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होता है उठने का, अप्रोप्रिएट टाइम होता है जिस समय हमारे ब्रह्मांड की सारी दैवीय शक्तियां होती हैं वो बरसाती हैं. और हमारी जो साधना होती है, हमारे जो भी एक्टिविटी होती है, जो भी स्टडी होती है, उसका बेनिफिट कई गुना ज्यादा मिलता है जो कि सूर्योदय के बाद में नहीं मिलता. महसूस करेंगे खुद. देयर शुड बी टाइम स्लॉट फॉर ईच एवरी टास्क. All the day's tasks should be properly scheduled. Regular and disciplined life saves a person from clutches of diseases.
अनुशासन तो है ही जरूरी, we all know it, because either we bear the pain of discipline or bear the pain of regret. So it is better to bear the pain of discipline rather than bearing the pain of regret. Same way, we should focus on our mental health also. The living state of human body consists of the five basic elements called Panch Tattvas and the five basic, streams of vital force called Panch Prana. The Panch Tattvas constitute the physical body and the Panch Prana create the mental body, subtle body. The flow of electricity is in a circuit is generated by the connection of the two complementary positive and negative types of currents. The life cycle of a human being also continues to evolve with the help of the two wheels of the physical and mental bodies. The collective contribution of these components is unparalleled in nature. In normal course, the human body performs only the routine tasks which are essential for its survival. However, if we practice with appropriate training and control, the natural instrument could be used to conduct supernatural activities also. The hilarious performances of great personalities in different fields of history prove that this small body of flesh and bones contains tremendous power. This power generally remains dormant and is therefore not manifested in most people. If awakened, this latent power grows and expands like a huge tree from a tiny seed. स्वामी विवेकानंद भी कहा करते थे कि जो हमारी spirituality is basically manifestation of divinity within and potential within. We have to practice prana sadhana also through pranayam. We'll discuss this in the coming sessions. The chetana or the consciousness of a human being is the driver of the vehicle of the body. The splendid structure of the body is of no use if there is no prana in it. Maintenance of healthy survival of the body and efficient use of its potentials depend on the level of one's chetana. तो हमारे को अपना चेतना का स्तर हमको जो है उसको और बढ़ाना है. Even slight imbalance in chetana or disharmony between the chetan, that is mind, and the jad, that is physical, वही नाशवान और शाश्वत, cause irreparable loss in terms of physical and mental health. Although the body of a lethargic, foolish, or insane person is normal and healthy, his wanted chetana may disturb his life drastically, leading to untoward consequences. This power of chetana is present in every organ, every cell of the body. However, this is functional, its manifestation resides in the core of the brain. So we have to practice mental health. The routine functions of human brain include auto-regulation of motor and sensory. While discussing the functions of brain, we must also take care of our subconscious mind, which controls most of our functions. So whatever vibrations we emit, they come back to us. Actually, I had to go out station these days, and this past week was
so eventful. I could not prepare much. So I think I'll beg your pardon, and I'll prepare better in my next session. For the present, I thank you all for listening to me so patiently, and I request Dr. Neha to kindly play the video for meditation. Dr. Neha. No sound. No sound on the video. Dr. Neha, sound, there is no sound. Sorry, is it not audible? Yeah, it's okay now. We could hear you. Let me try again. Sorry. वो थाइमस ग्लैंड सर्टेन एज आने के बाद थोड़ा सा वो सुषुप्त अवस्था में चली जाती है, थोड़ा सा स्लगिश मोड में। और ये जो थाइमस ग्लैंड है आपकी हार्ट चक्र को एक्टिवेट करती है, और ये जो थाइमस ग्लैंड है इससे हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। आपको इस मेडिटेशन के पहले एक चीज और मैं बताना चाह रही थी, ये थाइमस ग्लैंड को एक्टिवेट करने की एक छोटी सी सिंपल टेक्निक है, अभी आप जानेंगे। वो है, हाथ को इस प्रकार से रखेंगे, आप यहाँ पे हल्का सा टैप करेंगे, टैप कर लीजिए थोड़ा। जिनको नींद नहीं आती है वो सोने से पहले 2 मिनट इस प्रकार से करते रहेंगे, उनको अच्छी नींद भी आ जाएगी, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रांग होगी, थाइमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है। इस प्रकार से हल्का हल्का, बहुत ज्यादा जोर जोर से नहीं करना है, हल्का हल्का करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एग्जैक्टली ये जो जगह यहाँ पे आप टच करेंगे, जैसे हार्ड सरफेस रहता है, हार्ड लग रहा है ना आपको, हार्ड है, यस, ये जो हार्ड एरिया है यहाँ पे एग्जैक्टली सेंटर। Ma'am, is it center? Is it हाँ, center? यहाँ पे, हाँ, ये जगह पे। तो वहां पे आप YouTube में देखेंगे, आपको वीडियोस भी मिलेगी थाइमस टैपिंग के नाम से। तो ये रेगुलर आप अपने डेली रूटीन में इसको शामिल कर लीजिए। सुबह 2 मिनट, शाम को 2 मिनट, कभी भी चलते फिरते भी ऐसे 2 मिनट्स करेंगे, आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी। और खास करके जिनको नींद की समस्या है वो सोने से पहले इस प्रकार के करेंगे। मैंने एक और चीज नोटिस किया इसकी बेनिफिट, एक बार मुझे ब्रीथिंग की इश्यू हो रही थी, सर्दी हुई है, सर्दी होने के टाइम में दोनों नाक ब्लॉक हो जाता है ना, मुंह से श्वास लेना पड़ता है। तब मैंने क्या किया, यहाँ पे थाइमस को टैप किया, बस ऐसे ही, मुझे नहीं पता था इससे ये भी हो सकता है। थाइमस टैप किया तो मेरी नाक खुल गई थी, ब्रीथिंग अच्छी हो गई। एक और एडवांटेज पॉइंट है, तो ये बहुत अच्छी चीज है, इसको आप जरूर शामिल करें। अब हम दोबारा ध्यान में जाते हैं। ये जो ध्यान करने से विश फुलफिलिंग मैंने कहा है, विश फुलफिलिंग कैसे होगा, हमारी विशेस की पूर्ति कैसे होगी? जब डिवाइन एनर्जी हमारे शरीर में फ्लो करना शुरू होता है, सारी चीजें हमारे जीवन में घटित होने लगता है, जो भी आप चाहेंगे वो चीज होगी। डिवाइन एनर्जी का फ्लो नहीं है, इसीलिए तो सारी समस्याएं हैं। ठीक, आपका कनेक्शन जब स्ट्रांग होगा, जैसे मोबाइल का, अभी हम लोग मोबाइल के थ्रू जुड़े हुए हैं, इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं, अगर उसका नेटवर्क सही रहता है तो कनेक्शन अच्छा होता है,
सब कुछ सही से सुनाई पड़ता है, सब कुछ देख भी पाते हैं। अगर कनेक्शन स्ट्रांग नहीं है तो, नेटवर्क अच्छा नहीं है, कई जगह ऐसे बोलते हैं नेटवर्क ठीक नहीं है, तो वहां पे चीजें सही नहीं होती। उसी प्रकार से जो हमारा जो नेटवर्क है किसके साथ, परमात्मा के साथ, अपने गुरु, अपने इष्ट, अपने आराध्य के साथ सही करेंगे तो सब कुछ आपके जीवन में सही होगा। हमारे जीवन में सब चीजें सही करने के लिए उनके साथ कनेक्शन को स्ट्रांग करना जरूरी है। और जो नॉर्मल व्यक्ति है उनका जो कनेक्शन है कैसा रहता है, ये जो बाल है ना उतना पतला रहता है। वही एक महान योगी है, उनका जो कनेक्शन है पिल्लर की तरह रहता है, एक स्पिरिचुअल कार्ड रहती है कैसे पोल की तरह, वो स्पिरिचुअल कार्ड के थ्रू परमात्मा से अंतःकरण बोलते हैं, कनेक्शन होती है। ये जो है इतना पतला रहता है सामान्य व्यक्ति में, उनके पास तो उतना स्ट्रांग रहता है, मतलब उतना ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी तो उसके पास आती है। जितना हमारा कनेक्शन होगा उतना तो आएगी ना, इतना है हमारा जो है, इतना है तो इतना आएगी, तो इतना है तो इतना ज्यादा इतना आएगी, अगर इतना है तो बहुत ज्यादा मात्रा में डिवाइन एनर्जी का फ्लो आता है। अब ये मेडिटेशन को करेंगे कैसे, उसकी थोड़ा सा जानने के प्रयास करते हैं। इस मेडिटेशन के माध्यम से पूरी यूनिवर्स को हम ब्लेस करेंगे। जब पूरी यूनिवर्स को हम ब्लेस करेंगे, डेफिनेटली हमारे जीवन में भी उनकी ब्लेसिंग्स मिलेगी। जब सबके लिए अच्छा सोचते हैं, उनके जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो हमारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा घटित होने लगता है। उसके लिए कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। जब सबकी दुआ करेंगे, उन दुआओं में हम भी शामिल हो ही जाते हैं। पूरी यूनिवर्स की हम प्रार्थना करते हैं, उस यूनिवर्स में हम है ही, हमारी भी अपने आप चीजें होने लगती हैं। तो इसीलिए कहा गया है यूनिवर्सल पीस मेडिटेशन है ये ट्विन हार्ट मेडिटेशन। और मैंने अपने जीवन में महसूस किया है ये मेडिटेशन अद्वितीय है। नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन अबाउट दिस मेडिटेशन। मेरी शब्द कम पड़ जाती है। मैं अगर आपसे एक महीना भी लगातार इस मेडिटेशन के बारे में बात करूं, वो कम है, इतना ज्यादा है इस ध्यान में, मगर बहुत बहुत सिंपल है और बहुत इफेक्टिव है। आपको एक चीज मैं अपने अनुभव से शेयर करना चाहती हूँ। आपकी लाइफ में कई बार ऐसे सिचुएशंस आता है, क्राइसिस सिचुएशंस, डिफिकल्ट सिचुएशंस, ऐसा लगता है कि सब कुछ अंधेरा है, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है, ऐसा लगता है कि सब काम ऐसा पड़ा हुआ है, कोई हमको सहयोग नहीं कर रहे हैं, कहीं से कोई कुछ भी नहीं मिल रहा है। उस समय ये मेडिटेशन करिए, डेफिनेटली यू विल फाइंड अ वे। आपको कोई ना कोई ऐसा हेल्प मिलेगा, कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिलेगा अपनी समस्या का। मैंने अपने जीवन में कई बार प्रयोग करके देखा है। ये मेडिटेशन वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी वेरी पावरफुल, और आपकी जो भी ब्लॉकेज है उसको दूर करती है परमात्मा से। और आपकी जो भी कनेक्शन है, वो जो थोड़ा सा टूटा पड़ा हुआ है, कम है, वो जैसे ही स्ट्रांग होती है, सारी चीजें अपने आप सही होने लगता है। इसीलिए ये मेडिटेशन मैं हमेशा लोगों को सिखाती हूँ, हजारों लोगों को सिखा चुकी हूँ, और आज आपको भी सिखाने का प्रयास कर रही हूँ। और आप जरूर इस मेडिटेशन का लाभ लीजिए और रेगुलर उस मेडिटेशन को करने का प्रयास करिए। अगर रेगुलर ना भी होता है, कम से कम हफ्ते में 2 दिन, नहीं तो एटलीस्ट वंस इन संडे आप जरूर करने की कोशिश करिए। और जब भी आपको प्रॉब्लम आता है उस समय जरूर करिए, डेफिनेटली करिए, और आपको रिजल्ट 100% आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि मेरे जीवन में मैंने महसूस किया, वो मुझे हो सकता है तो आपको भी हो सकता है। कोई चीज सबके लिए एप्लीकेबल है, वो किसी व्यक्ति विशेष खास के लिए नहीं होता है। कितना टाइम करना चाहिए मेडिटेशन? पढ़े For what time duration for meditation? मेडिटेशन 25 मिनट्स लगता है इस मेडिटेशन को करने के लिए। और इसके पहले जो योग कल्पना सिखाती है वो योग आप करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा प्राणायाम करेंगे, उसके बाद ध्यान करेंगे, उसके बाद दोबारा थोड़ा सा एक्सरसाइज, सिंपल एक्सरसाइजेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। योग इसीलिए करना है मेडिटेशन के पहले ताकि चक्रास क्लीन हो, और मेडिटेशन के बाद योग इसलिए करना है जो एनर्जी है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो। कई बार मेडिटेशन करने के बाद लोगों को सिर में हैवीनेस होने लगता है,
वो हेवीनेस क्यों होता है? क्योंकि प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है एनर्जी, जो भी आया है ऊर्जा वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा था, इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो हेवीनेस नहीं होती है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए योग करना, एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग सीधा ध्यान में बैठ जाते हैं पहले प्रायर प्रिपरेशंस के बगैर, तो तभी ध्यान लगता नहीं है ढंग से। ठीक है, अब हम इस ध्यान के स्टेप्स को जान लेते हैं। स्टेप नंबर 1 है, ये जो ध्यान है इसके माध्यम से हम यूनिवर्सल पीस, पूरी विश्व वसुधा की शांति की कामना कर रहे हैं, हम अच्छा सोच रहे हैं। तो वो अच्छा सोचने के पहले हमारा मन कैसा होना चाहिए? किसी के लिए कुछ अच्छा सोचना है, उसके पहले हम कैसा हो, हमारा मन कैसा होना चाहिए? हमारा मन शांत हो, हम खुश हो, हमारा मन प्रसन्न हो, एटलीस्ट स्ट्रेस फ्री हो, तब हम दूसरों के लिए कुछ सोच पाते हैं, कुछ कर पाते हैं, कुछ उनके लिए दुआ कर पाते हैं। तो यहाँ पे बात आती है, कब हमारा मन शांत रहता है, कब हमारा मन प्रसन्न रहता है? बताइए आप। When you are happy. बहुत सिंपल सा। जब हमारे साथ कुछ अच्छा होता है। अच्छा होता है। नहीं, प्रातः काल के वक्त हमारा मन शांत होता है। सुबह सुबह प्रातः काल। हाँ, you are satisfied. सुबह करवा के अर्ली मॉर्निंग हो या शाम करवा के सबको। यस, और अगर हमारी रहती है पॉजिटिव फॉरगिवनेस से। ओके, मैं एक साधारण एक लेमैन से मैं पूछूं आप कब खुश रहेंगे, वो एक आंसर, नॉर्मल आंसर क्या रहता है? जब आपकी विशेस की फुलफिल होती है। वो कहता है मेरी इच्छा की पूर्ति होती है तब मैं खुश रहता हूँ, भले एक ही मिनट के लिए सही, वो एक पल के लिए सही, एक दिन के लिए सही, आधा घंटे के लिए सही, मैं उस समय मैं खुश रहता हूँ, वो ये कहते हैं। तो मगर हर समय हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो ये जरूरी नहीं है। You cannot satisfy all the desires at once, नहीं हो पाता है। मगर खुश रहने के लिए उन अच्छे पलों को अगर याद करेंगे जो ऑलरेडी आपके जीवन में हुआ है, कुछ ऐसे इवेंट्स है, कुछ ऐसे हैप्पी मोमेंट्स है, उसको रिकलेक्ट करेंगे, तब भी आप उस खुशी की एहसास में जा सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू डू। मान लीजिए जिस दिन आप It's okay. You don't have to say anymore. देखा, कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं लाइफ में, वो बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होता है, बहुत अच्छा होता है। कोई आपने अचीव किया है, accomplishment। So we don't know if she was raped. She said something about the man standing behind her. All of the victims were raped from behind. That a coincidence? Reagan also said that schizophrenics often incorporate details that they've heard in the media into their delusions. These attacks have been all over the news. But she found her way to our unit. Look, let's be honest, she's the only thing we got. She's on 24-hour hold. Let's try again when she's more stable. Semen in Miranda's rape kit, and they got a match. So automatically the smile will come. Just smile and be aware of the In danger. उसके बाद एक और घटना को याद करेंगे। Smile and be aware of the crown chakra, जो सहस्रार चक्र है, उसके बाद दोनों चक्र के प्रति अवेयर होते हुए अपने दोनों हथेलियों को जो बगल है उसको। I mean, actually, it's not really key. It's made of sorry because I mean, actually, that's sometimes. I mean, sometimes it's too sticky, but you know, he's not. Not at all. No, sir. I mean, actually, there's something over us inside the air. It's actually, I was talking, you know, my mom says, "Oh, it's better to use a pencil, not the crayon." But I actually think it isn't the color of blood anymore. I mean, everything is different. फिर उसके बाद आप Have really changed. इस प्रकार से नीचे रखेंगे, ऐसा ओपन वाला नीचे रखेंगे। कोई मुद्रा Actually, you know, it's only when I eat the crust and the center falls out right in the middle of the world, and the goats actually had strings on their toes. और उसके बाद ये जो है सहस्रार चक्र है, यहाँ पे जस्ट अबव, यहाँ पे आपको एक brilliant white light imagine। Bellevue. He and Miranda must have had sex in the ward. He was discharged this morning. You sure the sex was consensual?
Unfortunately, it happens all the time at the hospital. And Ray Ray is not a rapist. His DNA is in the system for filing hundreds of false reports about his neighbor trying to murder his cat. Look, As far as Miranda's concerned, this is good news. She wasn't raped. I talked to her, Olivia. I think she was. The rape kit didn't find any evidence of spermicide, which was present in the other two victims that were raped. And the only semen belonged to Ray Ray. Which only means she wasn't raped last night. Schizophrenics often lose perception of time. Something that happened a week ago, they'll say happened yesterday. And she does fit the PERPS criteria. You find a victim who has a disability and exploit it. The schizo offer meds. Seems like a perfect target. Schizophrenics are twice as likely as the general population to be sexually assaulted. Statistics aren't going to tell me when she was raped. Hello? I can't find my head. Again, we will bless the earth. Ray, back to Bellevue and ask Miranda. We will bless all the people in India. और जहाँ पे आप रह रहे हैं, जिस शहर में. Hold awake. She checked herself out, Dr. Hendricks. When? A couple hours ago, as soon as the 24-hour hold expires. एक विश समाज के लिए. जहाँ पे आप रह रहे हैं, वहाँ पे आप Well, क्या चाह रहे हैं? What change you want? Where does she live? She wouldn't tell me. She has a permanent address. She should have been kept in the hospital. Of course, sir. She's allowed to check herself out unless a court compels her to stay. This is exactly the problem with the mental health profession. You medicate them just enough so you can cut them loose, and then nobody monitors them. They go off their meds, and the next thing you know, they either become a victim of a crime or they commit one. Either way, we have to clean up your mess. So what, we lock them up to make your life easier? Is that your solution, Olivia? If it keeps them safe, yes. I left the job because I got sick of locking them up. I'd rather treat the criminals and help the victims. Do you think Miranda's being helped right now on the street? I think we all can agree the answer to that is no. So let's find her. Any relatives? She mentioned a sister. I'll check her old medical records, see if I can find a contact number. Check public records too. To work? I'm gonna need a shrink if we find Miranda. She trusts you. My wish was fulfilled. मगर आप जो विषय They have a job. नहीं So हो what are रहा you doing है here? आपको चिंता करने Help की anymore, but I know भगवान you want to आपको find this कुछ guy as और badly अच्छा as we do. जैसे एग्जांपल के लिए एक स्टोरी बताती हूँ एक Miranda got जो sick not किसान long है after this was taken. मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ इसलिए स्टोरी ज्यादा Back then, I बताती thought हूँ she could do anything. तो चाहे बड़े हैं बच्चे हैं Junior year in college, she got an stories से internship ज्यादा with a connected senator in होते हैं। D.C. तो That's when she started एक telling us the किसान है, Soviets were bugging her phone. वो राजा के पास गया Now it's terrorists. और We saw you, राजा के sister. पास जाके पूछ रहा है राजा 4 ने days पूछा, ago. क्या चाहिए तुमको तुम मेरे पास She was pretty क्या bad. चाहिए तुमको तो कह रहे इस साल Say मेरे anything जो about है somebody trying to कद्दू attack her? की खेत में खराब हो A चुका man है tried to मुझे 1 kill किलो her. कद्दू चाहिए Someone's always trying to kill तो her. राजा के पास जाके कद्दू थोड़ी मांगता है Hurt her inside, she said. राजा तो बहुत कुछ दे सकता है Known it was true. There's no way you could have known. हमारी जो विशेष You है can't help your भगवान के sister लिए if she कद्दू refuses जैसे to ही be helped. छोटे छोटे हैं Idea where she might go? I bought तो her an भगवान apartment बहुत with the inheritance after her mother died. कुछ But देना चाहते हैं हम तो छोटी छोटी विश ही मांगते हैं rarely stays there इसलिए जो anymore. भी अगर Well, नहीं where हो is रहा है उसमें भी Upper West कहीं ना Side. कहीं उनकी कुछ योजना है Park. वो कुछ अच्छा हमको देना चाहते हैं उसको The ऐसे ही rapes. सोचिए और आगे बढ़ते जाइए पहले एक विश को आप ब्लेस करिए डेली उसको ब्लेस करिए जो भी आप पूजा पाठ या ध्यान साधना जो भी करते हैं उसके बाद Dr. उस wish को Hendricks. कंटिन्यू करना लगातार उसको होते हुए देखिए ठीक है Anywhere. और She said they ये ध्यान communicate करने through से the पहले lights. कुछ एक्सरसाइजेस हैं मैं कल्पना को बताऊंगी वो ऑलरेडी आप योग कर ही रहे हैं उसमें इंक्लूडेड ही है सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं आई रोटेशन है हल्का सा हम करना चाहे तो अभी सिंपल सिंपल वाला 2-4 कर सकते हैं आई रोटेशन वाला कर सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको घुमा लीजिए 12 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Next opposite direction 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. Next हल्का सा neck movement है left and right 1 8 9 Next, up and down 1 2
6, 7. Hey, you have an hour this week, right? Yeah. Great. I can teach you how to play 100 songs on piano. Such a shame, Dr. Saab, we missed the entire. I understand. Yes, yes. Sorry, but I don't think it's the background noises from our Zoom meeting. I think it's a recorded session of hers, and we can't control that because it's her recorded session, which was quite disturbed.